Welcome student. Today we will do Ampere's circuit law. Welcome to the class. So we will cover today Ampere's circuit law. So give the heading. Student wait for 1 or 2 minutes. Some problem is going on. Yes. Now the problem is fixed. Ampere's circuit law. Ampere's law. Please make some notes. Is Ampere law in electromagnetism. Better we should write in electromagnetism. Is analogous to Gauss law. In electrostatics. तो पहली चीज तो आपको ये समझ लेनी चाहिए, जिस तरह हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गॉस लॉ को अप्लाई करते हैं, उसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करते हैं. It states that the line integral of magnetic field V around any closed path is equal to mu0 times the net current I threading through the area enclosed by the path. That is line integral. We'll take a good number of examples. B dot di is equal to mu0 I. Mu0 is the permeability of free space.
and you can always write mu 0 as 4 pi into 10 to the power minus 7. अब लॉ को अप्लाई कैसे करते हैं इसको देखते हैं. जैसा हम गॉस लॉ में कहते हैं द क्लोज इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ए क्लोज सरफेस, इसी तरह यहाँ हम बोलते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल. वी विल टेक नाउ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड. आप इसको नोट कर लीजिए. ओके, अब देखिए लॉ को अप्लाई करेंगे और सीखेंगे कि कैसे लाइन इंटीग्रल निकालते हैं. हमें किसी भी जो हम एरिया लेते हैं क्लोज पाथ का, थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ, ये बात हमें ध्यान रखनी है. थ्रेडिंग थ्रू द एरिया एनक्लोज्ड बाय द पाथ. अब देखिए ये सबसे पहले नोट करने वाली बात है यहाँ पर कि डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है. डायरेक्शन ऑफ करंट देखिए आप, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. और ये डॉट है करंट, डॉट मतलब आउटवर्ड. तो हमने एक एरिया लिया, सिलेक्ट किया. द टोटल करंट क्रॉसिंग द लूप, crossing the loop is plus I1 minus I2 plus I3. अब आप देखिए, जब आप करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, कैसे करंट ले रहे हैं आप, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले रहे हैं. और ये क्या है, डॉट, नॉर्मल एंड आउटवर्ड. डॉट को कहते हैं I1 इज नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप एंड आउटवर्ड. और क्रॉस का मतलब है नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ लूप. तो देखिए डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन है. और डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्या लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज. जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में इंटीग्रेशन लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो डॉट को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव. क्रॉस को हम क्या लेंगे, नेगेटिव. और फिर डॉट आ गया, इसलिए हमने यहाँ I4 को कंसीडर नहीं किया है. वी हैव नॉट कंसीडर्ड I4 बिकॉज इट इज आउटसाइड द लूप. हम सिर्फ उन्हीं करंट्स को कंसीडर करेंगे जो लूप के अंदर होंगी, जो लूप के अंदर होंगी. तो I4 is not considered because it is outside the loop. लूप के बाहर है. So B dot dl will be mu 0 plus I1 minus I2 plus I3.
तो रूल बना लीजिए आप, और रूल बहुत सिंपल है। when line integral is in anti-clockwise sense, then dot is positive and cross is negative। और इसका उल्टा भी होता है, अगर आपका लाइन इंटीग्रल क्लॉकवाइज सेंस में है, अगर आपका लाइन इंटीग्रल क्लॉकवाइज सेंस में है तो डॉट नेगेटिव हो जाएगा और क्रॉस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको अप्लाई करना आना चाहिए। यू मस्ट नो हाउ टू अप्लाई द रूल। इसको आप नोट कर लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और अगर लाइन इंटीग्रल क्लॉकवाइज सेंस में होगा तो डॉट नेगेटिव हो जाएगा और क्रॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो रूल अप्लाई करने में बस यही इसका ट्रिक है। ओके, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर आप देखिए, ये देखिए लाइन इंटीग्रल कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पर लाइन इंटीग्रल कैसे है, इधर देखिए आप, क्लॉकवाइज। तो इस लूप के लिए I1 पॉजिटिव होगा क्योंकि आउटवर्ड है, पर इस लूप के लिए I2 क्या है, नेगेटिव। क्यों, इट इज इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स carrying current I1 and I2 in the same direction, in the same direction, and a close path is shown। तो दिस इज द क्लोज पाथ, ये देखिए आप। So here B dot dl will be mu 0 plus I1 minus I2। इतना आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स।
ये देखिए आप यहाँ पर है ये लाइन डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रल, डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल, और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ लाइन इंटीग्रल ऐसे है। So if you understand it and note it down, रूल को अप्लाई करना आना चाहिए, और एक दो एप्लीकेशंस करेंगे तो आपको बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्लोज पाथ के अंदर देखना है करंट कितनी फ्लो हो रही है। You have to just calculate the current which is flowing through the closed path. और यहाँ पे देखिए पिछली स्लाइड पे जाते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज था डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन, और ये करंट क्या था डॉट, और ये था क्रॉस। तो एंटी क्लॉकवाइज में डॉट पॉजिटिव है और क्रॉस नेगेटिव है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लॉकवाइज तो इसका रिवर्स हो जाएगा, डॉट विल बी नेगेटिव एंड क्रॉस विल बी positive, and we will only consider those current which is inside the closed path. We will not consider any current which is outside the closed path. तो आप इसको नोट कर लो। इसको सीखना पड़ेगा आपको कि कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, अब देखिए टू एम्पियर, टू एम्पियर, टू एम्पियर, टू एम्पियर, एंड वी हैव टेकन लाइक दिस। तो आप इसके लिए एम्पियर्स रूल लिखिए, v dot dl will be एंटी क्लॉकवाइज +2 +2, फिर क्रॉस आया -2, फिर डॉट +2, फिर क्रॉस -2, so it will be 0. This is example 1. Now take example 2. Here you take the current in which sense, direction of integral clockwise. एक मिनट, we should not mention this. This is not I, direction of integral, and inside the loop there are currents cross 2 ampere, dot 2 ampere, dot 2 ampere, cross 2 ampere. So how to write v dot dl? ये देखिए आप, सबसे पहले तो आप देखिए करंट का डायरेक्शन क्या है, इंटीग्रल का डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज में डॉट क्या होगा, क्लॉकवाइज में डॉट क्या होगा नेगेटिव, और तो देखिए यहां से शुरू करते हैं, क्रॉस μ0 +2 डॉट -2 +2 -2, so b dot dl is 0.
ओके, तो डायरेक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर हो गया। अब हम एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करेंगे। टुडे वी विल derive the magnetic field due to long straight current wire. In next class we will derive toroid, solenoid and torque. तो by the end of next class लगभग हमारा ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो सबसे पहले आप रूल लगाना सीख लीजिए। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस एक ही डेरिवेशन करेंगे आज। ये वाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग straight current carrying wire. Important. अब देखिए, हम आगे बढ़ रहे हैं और अगली स्टेप में इसे क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। ये देखिए, ये एक्स वाई है जो यहाँ पर, ये लॉन्ग लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है। इससे आर डिस्टेंस पर, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम दिस वायर, वी नीड टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। सो बाय यूजिंग एम्पियर्स सर्किटल लॉ, we will find this magnetic field due to current I at point P, which is at a distance R from the long wire. So देखिए, अब हमें let us write how to write this question. Let us wait a minute. Let us use Ampere's law most important to find the magnetic field due to a long straight current carrying wire XY at a point P, distant R from the wire, distant R from the wire। ये तो पॉइंट आपको दिख ही रहा है, फ्रॉम द वायर, वेयर द मैग्नेटिक फील्ड B is to be evaluated। Let us draw a circle of radius
R, radius R, passing through the point P, passing through the point P. तो पॉइंट P से पास होने वाला हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस कितनी है R है. द सर्कल इज नोन एज, अब देखिए मेथड्स को सीखिएगा. द सर्कल इज नोन एज, जैसे हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, एम्पीरियन पाथ known as Empyrean path. तो ये हमने एम्पियर पाथ क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया. बाय सिमेट्री, सिमेट्री आप समझते हैं. बाय सिमेट्री द मैग्नेटिक फील्ड B, the magnetic field B is same at all the points on circle and its direction is tangential to the circle. Everywhere. तो हमें करंट निकालनी है एक्स वाई, which is a very long straight current carrying wire at a point P. The distance of point P which we have taken as R from the wire. So we have drawn a circle of radius R, and this circle will work as a Amperian path. Similarly, as we do it in electrostatics, Gaussian surface, similarly, we'll have to draw a closed loop. और फिर हमें ये देखना होगा कि उस क्लोज लूप के अंदर कितनी करंट है. तो आप देखिए इस क्लोज लूप के, आप ऊपर से देखिए इस क्लोज लूप में करंट क्या है, आउटवर्ड जा रही है. इस क्लोज लूप के लिए हमें एम्पियर्स लॉ को क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा. इतना सब हमें लिखना चाहिए. That's why I have selected only one derivation for today's class. The remaining application we will do in the next class. तो ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए. Okay. Most important. Okay. Please write it. Okay. तो अब देखिए, अगले उसमें हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे.
by Ampere's law. By Ampere's law for the circle, we have B dot dl is mu 0 mu naught I, where I being the current enclosed by the circle, enclosed by the circle. अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक एलिमेंट सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए आप, this element we will select. Let us consider a circle element dl at point P. At point P. Since dl and P at P are along the same direction. Along the same direction. तो आप देखिए, ये हम क्यों कह रहे हैं कि दे आर इन सेम डायरेक्शन। ये देखिए, डीएल और बी की डायरेक्शन क्या है, सेम है। Why? Because magnetic field is tangential. We have the line integral. कैसे अप्लाई करना है एक एग्जांपल से सीखेंगे। Equal to b dl cos 0. Cos 0 is 1 on b dl. So b is constant, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि सर्किल के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस भी वायर से क्या है, सेम है और सिमेट्रिकल, इसलिए ये बाहर चला जाएगा। Because b is constant around the circle. और कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं।
अब देखिए, अब हमें निकालना है वैल्यू लाइन इंटीग्रल की। ये देखिए, यहाँ मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब देखिए, लाइन इंटीग्रल हमें मतलब टोटल लेंथ ऑफ सर्किल दैट शुड बी टेकन एज 2 पाई आर। तो अगले स्टेप में हम यही कर रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dl मींस टोटल लेंथ ऑफ एम्पियर्स लूप, एम्पिरियन पाथ की टोटल लेंथ। तो हमेशा एक बात आप याद रखो कि इंटीग्रेशन dl, लाइन इंटीग्रल dl क्या बताएगा? टोटल पाथ लेंथ ऑफ एम्पिरियन पाथ की टोटल लेंथ। तो यहाँ पे हमने एम्पिरियन पाथ सेलेक्ट किया है सर्किल, तो सर्किल की टोटल लेंथ कितनी होगी? 2 पाई आर। into 2 pi r. Now we know that line integral b dot dl is equal to mu 0 into current inside the Amperian path. तो b dot dl को तो हम लिख सकते हैं b into 2 pi r, and this is mu 0 into I. So magnetic field will be mu 0 upon 2 pi I by r. आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, magnetic field is mu 0 upon 4 pi 2 I by r. So ये आपको अब समझना पड़ेगा कि ये डेरिवेशन कैसे किया गया है। वो पूरा लिखकर किया है। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। इसको हमें बहुत अच्छे से करना है। We'll do only one derivation today, it is that one. You can have your questions. तो डीएल के बारे में तो आपको मैंने बता ही दिया। हमेशा आप याद रखिए, लेंथ ऑफ क्लोज्ड लूप, so you may call it Amperian path. तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया 2i by r। ओके, तो आप लोगों ने इसे नोट कर लिया। तो देखिए अब दो डेरिवेशन और हैं, एक तो सोलेनॉइड है और एक टोरॉइड है। तो थोड़ा आप इसे पढ़ के रखिएगा, तो इट इज वेरी इजी टू अप्लाई द। अगली क्लास में ये एंड हो जाएंगे।
फिर मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग लूप. So we add it over here. We have done only one derivation today, the Amperian path. अब आप देख लीजिए कैसे ये सिलेक्ट हुआ है. This is the Amperian path. जो आप और लूप के अंदर जो करंट होती है उसी को तो हम कंसिडर करते हैं. और ये थी डॉट और ये हमने करंट ली थी. ये लूप का लाइन इंटीग्रल की डायरेक्शन ली थी एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए हमने उसे पॉजिटिव लिया.